Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Welcome to Smart Learning Academy. Today we are going to study in, at, on. In, at, on. They are called prepositions. They can be prepositions of time or place. ग्रामर के लिहाज से इन, एट, ऑन को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकते हैं। आप यूजेज को देखते हैं। नंबर 1, इन को हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एन स्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, month, season, year, etc. इनको हम दिन के दौरानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या महीनों के नाम के लिए, सीज़न के लिए, ईयर के लिए, etc. For example, she always reads newspaper in the morning. अब यहाँ पे morning है, इस वजह से हमने in का इस्तेमाल किया है। In the summer, we have a rainy season for 3 weeks. अब यहाँ पे summer है, इस वजह से हमने in का इस्तेमाल किया है। The new semester will start in March. अब महीने का नाम है March, इसलिए हमने in यूज़ किया है। कुछ और एग्जांपल्स को देख लें। सीज़न के लिए in winter, weeks के लिए in 4 weeks, decades के लिए in the 90s, months के लिए in August, century के लिए in the 21st century, year के लिए in 2017, parts of the day के लिए in the morning, length of time के लिए in 3 hours. Second usage को देखते हैं। It is used to indicate an enclosed space. In tells us the noun is in an enclosed space, surrounded or closed off on all sides. Basically, when something is inside something, इनको हम enclosed space के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके चारों इतराफ बंद हो। For example, my hometown is Los Angeles, which is in California. अब यहाँ पे मेरा hometown जो है वो Los Angeles है, जो कि कैलिफोर्निया में है। अब यहाँ पे क्या है? बाउंड्री है। The sheep are grazing in the pasture. भेड़ चरागाह में पैर रहे हैं। अब चरागाह क्या है? इसके चारों इतराफ में वॉल बने हैं। The children are playing in the street. बच्चे गली में खेल रहे हैं। अब गली के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके साइड से या इतराफ से बंद है। अब एट को देखते हैं। It is used to point out specific time. At जो है वो specific time के लिए यूज़ होते हैं। For example, I will meet you at 12 p.m. The bus will stop here at 5:45 p.m. कुछ और examples. At 6 p.m., at 12 p.m., at midnight, at night, at the weekend, at 10 o'clock. अब हमने पढ़ा कि दिन के दौरानी के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, जबकि नाइट और मिडनाइट के लिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 2, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस। एट जो है वो जगह के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ पार्टी एट द क्लब हाउस।
There were hundreds of people at the park. We saw a baseball game at the stadium. अब इन जगहों के लिए भी हम at इस्तेमाल करते हैं। फिर at और in में क्या डिफरेंस है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। On. It is used for roads, streets, highways and avenues. On को हम streets के लिए, highways के लिए और roads के लिए इस्तेमाल करते हैं। For example, our house is on 3rd Street. अब यहाँ पे क्या है? 3rd Street है और ये हमारा house है। There is no one on the street. गली में कोई भी नहीं है। Second usage, it is used to express a surface of something. On जो है वो सतह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। For example, there is a new roof on the house. अब on the house क्या है वो surface है, सतह है। Next example, 3 players are practicing in the field. ये भी field क्या है? इसके surface है, सतह पर है। Next usage, it is used to specify days and date. On को हम दिनों के लिए भी और तारीख के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। For example, the garbage truck comes on Monday. अब यहाँ पे Monday है इसलिए हमने on इस्तेमाल किया है। My birthday is on April 13th. अब यहाँ पे अप्रैल 13 है इसलिए हमने on इस्तेमाल किया है। लेकिन ये याद रख ले कि अगर डेट ना हो, सिर्फ महीना हो तो हम in इस्तेमाल करेंगे। अगर डेट हो तो फिर हम on इस्तेमाल करेंगे। For example, days of the week के लिए on, days of the month के लिए on March 15, 2020. Dates with months in days on April 13. Holidays with days. For example, on Christmas Day. Usage number 4. It is used to indicate a device or machine, such as phone or computer. हम on को devices के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़ोन हो, कंप्यूटर हो वगैरह। For example, he is on the phone right now. She has been on the computer since this morning. My favorite movie will be on TV tonight. It is also used to indicate a part of the body. अब parts of body के लिए भी हम on इस्तेमाल करते हैं। For example, this stick hit me on my shoulder. अब my shoulder है तो shoulder के लिए भी हमने on इस्तेमाल किया है। My mother kissed me on my cheek. तो यहाँ पे cheek है इसलिए हमने on यूज़ किया है। I wear a ring on my finger. तो finger के लिए हमने on यूज़ किया है। Usage number 6 को देख लें। It is used to indicate the state of something. ये किसी चीज़ की हालत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। For example, everything in this store is on sale. The building is on fire. Number 7. It is used for floors of building. ये building के छतों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मंजिल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। For example, they live on 2nd floor. A dead man was found on 3rd floor. Now this is your quiz time. What you have to do? You have to select on, at or in.
Which one is correct? You have to write your answers in the comment box. And if you have any difficulty, suggestion, any problem, you can write me in the comment box below. Thanks for watching.